Good morning, students. Today we are going to discuss second chapter Rights in Indian Constitution, Class Plus One Arts. So हम आज अधिकारों के बारे में बात करेंगे. इंट्रो में rights are the condition in social life without which one cannot develop in life. Rights are guarantee for the success of working democracy, so they are included in each country's constitution. हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमारी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. उनके बिना हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते. राइट्स जो है एक डेमोक्रेसी की और देश के डेमोक्रेटिक होने की गारंटी है. हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जोड़ा गया है. उसके बाद मीनिंग ऑफ राइट्स. अकॉर्डिंग टू लास्की, rights in fact are those conditions of social life without which no man seek in general to be his best. Second, according to Holland, rights are one man's capacity to influencing the act of another by means of opinion and force of society. Rights are claims of individuals recognized by society and constitutions which are essential for development of one's personality. Bill of Rights. Bill of Rights means, as we see, a list includes names of items. In the same way, Bill of Rights is a list of rights. Rights have been incorporated as Bill of Rights by all the countries. During construction work of Asian Games in New Delhi, contractor employed workers at low wages and poor working conditions. A petition was filed against him in Supreme Court. Court declared it exploitation of one's rights and directed the government to ensure payment for the workers. बिल ऑफ राइट्स की बात करें तो दिल्ली में हो रहे एशियन गेम्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उस पर कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर्स को बहुत कम तनख्वाह पे और पुअर वर्किंग कंडीशन पे रखा हुआ था. तो एक एप्लीकेशन लगाने पे हाई कोर्ट में उन मज़दूरों की बात सुनवाई हुई. गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए कि उनको उचित उनकी सैलरी या पेमेंट दिलवाई जाए. इन द डेमोक्रेसी आर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर राइट्स फॉर इंडिविजुअल. Nearly all democracies ensure protection of rights by the constitutions. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान हमारे राइट्स को सिक्योर करता है. For this separate charter of rights is maintained, which enlists all the rights mentioned and guaranteed by constitution. हमारे अधिकारों के लिए एक अलग से अध्याय है. Such a charter is known as Bill of Rights. उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. बिल ऑफ राइट्स prohibits government from infringing the rights of individuals and guarantees a remedy if these rights are violated. बिल ऑफ राइट्स सरकार को इंडिविजुअल्स के अधिकारों का खनन होने से रोकता है तथा एक रेमेडी हमें प्रदान करता है. रेमेडी मीन्स एक ज़रिया जिसके ज़रिए हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करके अपने उन अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं. Fundamental rights are rights which are fundamental in the governance of the country. They help to develop individuals' personality guaranteed by both government. Rights have following attributes. The constitution of country provides them. Fundamental rights cannot be taken away. It is difficult to amend fundamental rights. The Supreme Court, High Court, National Human Rights Commission in India protect fundamental rights. Need for incorporating fundamental rights in constitution. अधिकारों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? These are basic ingredient of constitution. हमारे संविधान का ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं. They help in establishing strong roots of democracy. डेमोक्रेसी का आधार हैं. They preserve liberty of people and protect against state tyranny. ये लोगों की आज़ादी को, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेट को टायरन होने से रोकते हैं. दे हेल्प इन बिल्डिंग अ रिलेशन बिटवीन पीपल एंड स्टेट. दे प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स. दे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस. बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका. South African Constitution was enacted in 1996. After its promulgation, faced the
threat of civil war after the end of apartheid policy of apartheid that was based on the caste color. In these conditions, Bill of Rights was adopted in South Africa. It is landmark in African democracy. It forbids discrimination on the basis of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, culture, language, birth, etc. So major rights enshrined in the South African Constitution included rights to dignity, rights to privacy, right to fair labor practice, right to healthy environment, right to adequate housing, right to health care, food, water, social security, children's rights, right to basic and higher education, right of culture, religious and linguistic development, and right to information. So all these rights are included in African Constitution, and we have also adopted Bill of Rights from African constitutions. So that's all for today. Thank you very much.